So let's start from the point, you know. So we covered basically blood, right? We covered blood, all the components, right? What are the three components of the blood? Karthik, tell what are the main components of the blood? Ma'am, Hmm. RBC, WBC, platelets. Okay. Is it so, Oishi? Yes, ma'am. Anyone else wants to add what all things are there in blood? Okay, let me again. Plasma. Who told plasma? Sakshi. Sakshi. Yes, Sakshi, very good. So basically, blood will have, you should start from here. It's not only RBCs, WBCs, and platelets, what is there in blood. Okay, so blood basically it's a liquid, not completely a liquid, but it contains some suspended solids, right? So if we centrifuge the blood, okay, if we centrifuge the blood, what we will get? We'll get two components, right? One will be the solid part, another will be the liquid part. Okay, so the solid part, that is what? That is blood corpuscles, right? And the liquid part is blood plasma, right? So the solid part, which is the corpuscles, that includes what? RBCs, WBCs are platelets, right? You remember? I'll just recall it from here. See, the blood has two components, right? Plasma, which is the liquid part, and the corpuscles, which is the solid part, right? And then plasma was having few things, mostly water, but the 10% included these things, right? Vitamins, minerals, proteins, fibrinogen. I explained you fibrinogen, right? It helps in the blood coagulation, blood clotting. Then hormones, etc., right? And then the corpuscles, the solid part of the blood, that contains what all things? RBCs, WBCs, and platelets. Okay, WBCs are known as leukocytes, right? WBCs are known as leukocytes. What we call RBCs as? Anyone? Erythrocytes. Erythrocytes. Very good, Oishi. And what is the name for platelets? Prarthana, can you tell? Anyone? Sakshi, can you tell what is the term which we use for platelets? Not remembering? Thrombocytes. Okay, ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ, बट यू रिमेम्बर इट, आपको आगे भी याद रहेगा, ठीक है? So erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. Okay. Okay. So these are three parts. All the three are clear to everyone? Any doubt? What is the function of blood? We discussed, right? What is the function of blood? It transports the digested food from intestine to those organs where they are stored, right? Then it also carries the oxygen, right, from lungs to the tissues, and carbon dioxide from tissues back to the lungs, right? Then it also acts, it carries the cellular waste products to the kidney,
from where then they are removed from the body, right? And then water will also do balance, water balance in the tissues. Okay, like that means what? Excess water, if it is required, it will take in. If it is not required, it will remove it out, right? It will go out. So water is a very important factor. Blood is a very important carrier. Basically, it is a very important carrier. It also regulates the body temperature, right? It protects against diseases because it contains leukocytes, right? WBCs, and it also helps in blood clotting, right? So let's start the new topic, that is the blood vessels. So now we have discussed a little bit about blood. Now let's see what are these vessels in which the blood flows. Okay, so the blood is carried to different parts of the body through tubular blood vessels. So yahi pe clear term hai tubular. They are like tubes, right? That's why we are calling it tubular. They are tubular blood vessels. Okay, so you are seeing here, these are muscle, blood vessels in the muscles. These are veins, these are capillary. आपको आगे चल के और clear cut diagrams होंगे, ठीक है? So blood vessels जो होते हैं 3 तरह के होते हैं. This is very important. आप लोगों ने ये पहले पढ़ा है? Have you ever studied these things before in class 7th or something? Yes, ma'am. Okay. So others are hearing this first time? No, ma'am. Okay, सबने पढ़ा है, right? So you are acclimatized with the term, right? Accustomed with these terms also. So the blood vessels, basically they are of 3 types, right? Arteries, veins, and capillaries, right? So you all know about it. So arteries means what? They will carry blood away from heart, right? Away from heart means it will take the oxygenated blood. Basically, it is going to take the oxygen in the blood from the heart to all the different parts. Okay, from lungs the blood will come to the heart, and then heart से ये सारी चीजें लेके जाती हैं. Okay, so arteries will take or carry the blood away from the heart to the other parts of the body, right? So it has thick, elastic, and muscular wall. So ये important is thick, elastic wall. Okay, and the blood in it flows with jerks. Okay, why jerks? Because of pulse. ठीक है, जैसे हार्ट जो बीट करता है, हार्ट बीट आपने सुना होगा, फिल्मों में तो सुना ही होगा एटलीस्ट, राइट? मूवीज एंड ऑल. सो हार्ट जो बीट करता है, सो दैट इज व्हाट हार्ट पंप्स, राइट? सो हार्ट पंप्स विद अ पर्टिकुलर रिदम. ओके, सो वो जो रिदम होती है वो जो ब्लड में वेसल्स में एक पल्स की तरह फील होती है. इसलिए आपके रिस्ट के पास हम देखा होगा आपने, डॉक्टर्स पल्स जब चेक करते हैं तो आपको यूजुअली इफ यू होल्ड योर राइट हैंड टू लेफ्ट आर्म, ठीक है, लेफ्ट आपका जो फीस्ट है उसके नीचे अगर आप अपने आर्म पे लगाते हैं, कलाई पे जस्ट बिलो, सो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ योर आर्म यूजुअली यू फील अ पल्स, राइट? कि पल्स रेट कितनी चल रही है, ठीक है? सो बेसिकली वो पल्स क्यों होती है? बिकॉज आपका जो ब्लड है वो जर्क के साथ फ्लो करता है, एंड दैट जर्क इज ड्यू टू द a particular way of heart pumping, a rhythm of pumping of heart, right? So arteries may, yes. Ma'am, can you send the recording? My network is not working. Okay, recording will be sent. Okay, so the heart is pumping, right? So the heart is pumping the blood through a pressure. Okay, try to understand the concept. So heart is pumping the blood, so blood is going in the arteries, okay, and it is taking the blood with higher pressure, right? Because that pressure is coming from the heart, and this is sufficient pressure to make the blood reach to all the positions, all the areas, right? So because of this high pressure, comparatively, vein has to have a
thick wall. ठीक है, compared sorry arteries has to have a thick wall. ठीक है, veins के comparison में arteries will have thick walls because the blood is coming with a higher pressure. Okay, so similarly if you see a vein, so vein is a vessel which takes the blood from an organ towards the heart, right? So therefore वहां पे जो pressure होता है blood में वो comparatively low होता है, क्योंकि जो pressure heart से आ रहा है पंप होके वो यूजुअली आर्टरीज बेयर करते हैं. उसके बाद वो आर्टरीज के बाद वो कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होकर के अपना जो भी एक्सचेंजेस करने हैं, गैसियस एक्सचेंज, मटेरियल एक्सचेंज टिश्यूज के साथ, वो करता है. एंड देन इट विल टेक कैरी द ब्लड along with all the waste, CO2 and all, and then it will go in vein. तो वेन में जब ब्लड जाता है वहां पे उसके पास ज्यादा प्रेशर नहीं होता ब्लड में, राइट? सो देयरफॉर इट डजंट रिक्वायर अ थिक वॉल. तो इसलिए उनकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं. ठीक है, एंड द ब्लड हियर फ्लो स्मूथली. इसलिए हमको अगर आप वेन्स को टच करोगे तो आपको पल्स भी मिलेगी, आपको आर्टरीज को टच करना होगा तो आपको एक जर्क फील होगा. ठीक है, अंडरस्टूड? So this is important. Yes, ma'am. Okay, Yes, the ma'am. difference between arteries and veins. Okay, so ये क्लियर हो गया. आर्टरीज में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन के साथ ब्लड विल कैरी. ऑक्सीजन इज कैरीड इन द ब्लड इन विच फॉर्म? विथ द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. ओके, तो हम पढ़ेंगे आगे कैसे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है. यस, Ma'am, can you send excuse me. Yes, I understood. There is connectivity problem with few of the students. I will send the recording of the class. Okay, so the blood flows with jerk in arteries. It is usually deeply placed. What is the meaning of deeply placed? अगेन क्योंकि प्रेशर से आ रहा है तो हम क्या करते हैं, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज वो हमेशा सुपरफिशियली, मतलब जब आप अपने स्किन को देखोगे, जैसे आप अपने आर्म्स को देखोगे, सो व्हाट यू विल सी देयर, यूजुअली आपको जो दिखता है ब्लूइश कलर की वेन्स ना, जो लाइट मतलब डार्कर दिखती हैं, ऊपर की तरफ आपको ज्यादातर वही दिखती हैं, राइट? सो वो जो वेन्स होती हैं वो वेन्स होती हैं ऊपर की तरफ, सुपरफिशियल एरिया में जो फ्लो करती है, मतलब स्किन के जस्ट नीचे ज्यादातर वेन्स होती हैं. आर्टरीज और डीपर होती हैं. ठीक है, सो आर्टरीज यूजुअली हमको नहीं दिखती हैं, वेन्स दिखती हैं. इसलिए जब नॉर्मल जैसे अगर आपको कभी कट होता है, वैसे वेन्स में भी कट होगा तो आपका बहुत ब्लड फ्लो कर जाएगा, लेकिन यूजुअली ऊपर सुपरफिशियली जो एरिया होता है स्किन के जस्ट नीचे, वहां वेन्स होती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो डीपली प्लेस्ड होती हैं. ठीक है, so this you all should make this table in your copies. Okay, this is a homework. Please make the table, the differences between arteries and veins in your copies. Okay, yes Sakshi? Yes, ma'am. I couldn't hear you. Your voice is not clear. Please write your doubt in the chat box. Okay, so let's continue. So capillaries, now we have seen arteries and veins. Third is your capillary. Capillaries are what? These are the terminal branches of an artery. Basically क्या होती है, arteries blood लेके आ रहे हैं, oxygenated blood, right? Now this oxygenated blood will reach to the tissues not directly from artery. क्यों? Because what is the process which is involved in this exchange? This is mainly, हमने diffusion पढ़ा, right? We all studied diffusion, osmosis, right? आप लोग को clear है diffusion, osmosis? Is it clear to everyone what is diffusion? Yes, ma'am. Okay, so
here also, जैसे कि अगर जब arteries when they are taking the oxygen in the blood, okay, so when they are reaching, for example, any particular part, say they are reaching to the stomach walls, or they are reaching to the hands, wherever, okay, so when they are reaching to those areas or the organs, so what they are doing, they are releasing the oxygen to the tissues, and they're getting the CO2 from there, right? So oxygen jab release kar raha hai, तो it's not like कि it's there is a process of diffusion, means substance from the higher concentration will go to the lower concentration, right? So this is what happens when oxygen is coming in artery, in the blood their concentration is high, and in the tissues there is a need of oxygen, okay. So जब भी इस तरह का exchange होना होता है, जब भी कोई diffusion process होना होता है, so what is very important is the portion or the area should be very much in contact with each other. मतलब बहुत बड़ा सा मोटा सा अगर थिक वॉल है, उसके आर पार जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसके आसपास डिफ्यूजन जल्दी नहीं हो पाएगा. लेकिन if you have a very thin wall और बहुत ज्यादा like जैसे हमने रूट हेयर्स को देखा था कि बहुत ज्यादा like विलाई काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर, या फिर बहुत फाइन मेम्ब्रेन हो, ठीक है, मतलब जैसे हम सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं उसमें एक ही सिंगल सेल की लेयर हो, ठीक है, तो ऐसा बहुत फाइन मेम्ब्रेन्स ऐसी जगहों पे होती है जहां पे भी हमको डिफ्यूजन करना होता है, एक्सचेंजेस, राइट. तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि आर्टरीज जो है वो जब कैरी करके ला रहे हैं ऑक्सीजन या जो भी चीजें, स्पेशली वी कंसिडर ऑक्सीजन हियर, so that oxygen is going in the tissues, not directly. Arteries will terminate in very small branches, okay. तो वो क्या बना देते हैं, कैपिलरी बनाते हैं, okay. So they will form capillaries, means बहुत छोटे छोटे tubules, okay, and then it will collect whatever gases are coming in, and they will release the oxygen back, and then what will happen, the collected blood will be called as deoxygenated, ठीक है, मतलब उसमें से ऑक्सीजन चली जाती है, okay, deoxygenated blood, and there the same thing will form a vein, right. जैसे मैं आपको I'll just show you one diagram that will make you understand the things in a better way. Just a second. Can you see this, everyone? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. So just understand this. This is the artery, ठीक है? This is artery, ठीक है? और यहाँ पे arteriole और venule लिखा है, जिसमें से ये कैपिलरीज निकल रही है. मैं इसको और ज्यादा आपको क्लियर बताती हूँ. आपको आर्टेरियोल और वेन्यूल समझ में नहीं आएगा क्योंकि सी दिस डायग्राम, ठीक है. जैसे ये आपकी आर्टरी है, ये जो आर्टरी है जब ये छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, ठीक है, ऐसा ब्रांच या एक दो और ब्रांच हो सकता है, तो हम इसको आर्टेरियोल बोलते हैं. ये आपके चैप्टर में नहीं है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू. और वैसे ही वेन्स भी जब छोटे छोटे उसमें होती है तो इनको हम वेन्यूल बोलते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अगेन, इसकी सब ब्रांचेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आर्टेरियोल या आर्टरी से बहुत पतले होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत पतले पतले. तो इसमें क्या होता है, ये कैपिलरीज होते हैं, और ये कैपिलरीज टिश्यूज के पास होते हैं और उनके साथ बहुत प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरीज में बहुत इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो कैपिलरीज भी तो टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, राइट. तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही मतलब मोटी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं.
और इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस आराम से हो जाता है। जो भी गैसेस आ रही हैं ब्लड में वो इजीली डिफ्यूज आउट हो जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन इजीली टिश्यूज के पास पहुंचता है, और टिश्यूज में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है ड्यू टू रेस्पिरेशन, ओके, दैट विल come inside the blood, and then it will carry the blood. So blood is moving like this, right, like this to here towards the vein, and then the blood will go back to the, you know, this thing. See, I will show you. So here also you can see this particular part. See, आर्टरीज आ रही है यहाँ पे, आपको कैपिलरी नहीं दिखाया है, बट आपको दिखाया है कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी से बाहर की तरफ जाता है, न्यूट्रिएंट्स बाहर की तरफ टिश्यूज के पास जाते हैं, और क्या चीजें अंदर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड विल कम इन, वेस्ट मटेरियल्स विल कम इन, ओके, एंड दिस अगेन विल बी कॉल्ड एज वेन. Understood? Is it clear to everyone? Is it clear, bachcho? Yes, ma'am. My voice is audible to everyone or not? Yes, ma'am, it is audible. Okay. So understood the differences between arteries, veins. See here, capillaries में लिखा हुआ है, you know, it is a very narrow tube whose walls have a single layer of cells with no muscles. Okay, single layer of cells, यही मैं बता देती हूँ कि जो walls होती हैं उनमें single layer of cells होती हैं. Although the wall of capillary is very thin, yet an exchange of nutrient, waste product and gases can take place between the blood and the body fluids. It's yet, the word yet is not required here because mostly जहाँ पे भी ऐसे diffusion के through exchanges होने होते हैं, most of such places will have a very fine, very thin wall. Okay, because if the wall is very thick, diffusion process का जो rate होता है that decreases. Okay, so diffusion process becomes slow. Now, so here we end with the blood vessels. Okay, any doubt from blood vessels? Yes, Oishi? Ma'am, initially, ma'am, when the blood is coming to the artery, then it contains the oxygen, because in that diagram it was shown that in the capillaries the oxygen is getting removed and carbon dioxide is getting added. So initially it is oxygenated. Yes, see here arteries, it carries blood away from heart, it carries oxygenated blood. That means it contains oxygen. Okay, बिकॉज क्या होता है बेसिकली, आपको ये आपकी बुक में ही बताया हुआ है, यहाँ पे विल कम टू दिस जबर सर्कुलेशन सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वेन्स होती हैं, ये जो वेन्स हैं ये पूरी बॉडी में जा रहे हैं, ये वेन्स वापस आते हैं. ठीक है, और ये वेन्स क्या करते हैं, ये यहाँ पे ये आपको दिखाया है कि एक एक जो ये हमारा हार्ट है, राइट. हमको सबको पता है हमारा हार्ट का लोकेशन कहाँ है, राइट. अब इस हार्ट के लोकेशन के नीचे भी हमारी बॉडी है, उसके ऊपर भी हमारी बॉडी है, जहाँ हर जगह हमको ब्लड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, राइट. तो ऐसा दिखा है कि नीचे की बॉडी पार्ट और ये ऊपर का बॉडी पार्ट, एक सिस्टम अलग सा होता है लंग्स वाला. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ ब्लड फ्लो नहीं करना है, ब्लड में ऑक्सीजन डालनी है, राइट. तो हमारा एक हार्ट से एक सिस्टम जो होता है, एक मतलब blood vessels, they will go to lungs, they will get oxygen from there and they'll come return to the heart. ठीक है, and then it becomes oxygenated and then it will go to the rest body, मतलब नीचे भी और ऊपर भी जाएगा, और वापस से मतलब deoxygenated blood जिसमें waste है, कार्बन डाइऑक्साइड है, that will be that will be bring here, like यहाँ it will come to the heart, and then again the whole blood will be forced to go to the lungs to get oxygen. Okay, we'll come to this. Okay, just I was telling you that oxygen comes in the arteries, right? Oxygenated blood, except pulmonary artery. We'll come to this. Except pulmonary artery, this is artery but it carries a deoxygenated blood. This is exception. Okay, similarly deoxygenated blood भी जो होता है, वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, बट पल्मोनरी वेन जो होती है दैट इज एक्सेप्शन, इट विल कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये हम आएंगे, जब आप ये पढ़ोगे, हम जब हार्ट को डिस्कस करेंगे
तब it will be very clear to all of you. Blood vessels में कोई doubt है? Anyone? Is there any doubt in blood vessels or should we proceed? Ma'am, we can proceed. Okay. So let's start the heart. ठीक है, हमने भी blood vessels देख लिए, blood vessels की हमको understanding clear है, right? अभी हम देखते हैं कि heart में क्या क्या चीजें होती हैं. So heart is the main organ which pumps the blood, right? It is pumping the blood. इसका काम ज्यादा कुछ नहीं है. ये सी ना तो हार्ट ब्लड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ना ही ब्लड को मतलब डिस्ट्रॉय करता है, नथिंग. व्हाट इज द फंक्शन? इट विल जस्ट पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होती कि ब्लड जो है वो हार्ट में ही बनता है और हार्ट इसको पंप करता है. नो, ब्लड जो है वो हार्ट में नहीं बनता है. ब्लड हार्ट सिर्फ पंप करता है. जैसे हमारे पास पंप होता है, पानी जो है ग्राउंड से आता है और उसको हम पंप लगाते हैं तो वो हमारे ऊपर टेरेस में जो टैंक होता है उसमें भर देता है पानी को, राइट? सो सिमिलरली जो हमारा हार्ट है, इट वोंट फॉर्म द ब्लड, इट विल जस्ट पंप द ब्लड टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द ओवरऑल बॉडी, ऑल द टिश्यूज, ऑल द ऑर्गन्स. ओके, इसलिए हम ब्लड को, इस हार्ट को क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं. Okay, so heart is what? It's a muscular organ. It beats non-stop throughout one's life, right? This is known to everyone. ऐसा नहीं है कि हार्ट को कभी कभी मन किया कि अच्छा मुझे आज सोना है, थोड़ा मैं रेस्ट ले लेता हूँ. So there is no rest for the pump, for the heart. Okay, so the continuity, the discipline, the things we all can learn from our body itself, right? See the heart, it is working throughout. हम लोग थोड़ा काम करते हैं, हमको लगता है कि यार बहुत हो गया, but see the heart that is serving us throughout our life without fail. Like it cannot take rest, it cannot take something. So heart is an organ which is continuously working without a second delay. Okay, so it is working non-stop throughout our life. So heart में जब हम लोग देखते हैं, if you see the diagram of heart here, it has basically 4 chambers, right? यहाँ पे देखो, it has 4 chambers. 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं. जो ऊपर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Auricles. जो नीचे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Ventricles. ठीक है? So auricles and ventricles. So it receives the blood from different parts of the body and then pumps it into the lungs for gaseous purification. ठीक है? So now you understand, this is your heart. Okay, this is your heart. Everyone can see the heart? Let me increase the size, then it will be easy. Okay, so this is our heart, right? Now see, heart में 2 ऊपर की chambers हैं. ये जो छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं, right? ये क्या होते हैं? ये एक तरह से valve होता है. ठीक है, जैसे valve होता है किसी भी चीज को रोकता है, तो वैसे ये एक वॉल्व होता है. यहाँ पे इधर और इधर ये एक वॉल्व होता है, ठीक है, और एक और वॉल्व होता है, ठीक है, जो कि इधर होता है. ठीक है, आपको वो वॉल्व शायद नहीं पढ़ा है, आई चेक थ्रू इट. ठीक है, एनीवेज 2 वॉल्व दिख रहे हैं आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में. हमेशा याद रखना, जब हम अपने बॉडी में कोई ऑर्गन देखते हैं, जैसे अभी आप अपने आप को एक डॉक्टर की तरह अगर आप देखते हो, तो जब हम किसी की बॉडी हमारे सामने है, some patient is there and we are doing open heart surgery, right? Whatever we are doing, तो हमारे सामने जब कोई व्यक्ति होता है, any person, so always remember हमारा right जो होता है वो उसका left होता है और हमारा left उसका right होता है, right? If you are standing in front of me, my right hand or my right side of your heart will be your left side of your heart, right? My right side will be your left side and my left side will be your right side when you are facing me, correct? So हम maximum time में, ठीक है, maximum जब biology के बहुत सारे organs पढ़ेंगे तो you will see कि हम जिस चीज को right side देखते हैं वो left side होता है और इधर जो होता है वो right side. See, these all chambers are left and these all chambers are right. ठीक है, here. So remember, आपको पढ़ाया ही physiology इस तरह से जाता है कि when you are seeing a patient, by default आपके दिमाग में जो पिक्चर होती है हर एक ऑर्गन की will be set
in a way that you are working on it. Okay, so always remember that part. ठीक है, so अच्छा एक काम कर सकते हैं, someone can read this these lines, यहाँ double circulation का part. Anyone? Prarthana, are you there? Can you read? Yes, ma'am. मैम मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी स्लो मैम, सो मैम मेरी आवाज मैम आप तक नहीं जाएगी. No, I can hear. I can hear you. You can read. Okay, ma'am. The oxygenated blood from the lungs return to the heart, which it pumps again into different parts of the body. In this way, blood pauses twice through the heart, making one complete run through the body. It is called double circulation. Okay. So, what is double circulation? Double circulation is nothing but one circulation which goes from heart to lungs and from back to lung. ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? एक सर्कल को कंप्लीट करना, राइट? व्हेन वी कंप्लीट अ सर्कल इट इज अ सर्कुलेशन. ठीक है, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट गोइंग टू लंग्स, कमिंग फ्रॉम लंग्स एंड गोइंग टू हार्ट. मतलब ये ऐसा एक सर्कल होता है. ठीक है, ये जो आपको नीचे हियर लाइक यहाँ पे दिखाया जाएगा, ये हार्ट से देखो, यहाँ हार्ट से एक जो सर्कल यहाँ गया, मतलब एक जो ब्लड वेसल्स लंग्स को गई और लंग्स से वापस हार्ट को आ गई. तो ये जो सर्कुलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, सो दो सर्कुलेशन होंगे. ठीक है, एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दूसरा होता है जो पूरी बॉडी को लेके जाता है. ठीक है, हार्ट से सारी बॉडी पार्ट्स और फिर सारे बॉडी पार्ट्स से बैक टू हार्ट. That is systemic circulation. ठीक है, so two type of circulation are seeing, right? Pulmonary circulation and systemic circulation. ठीक है, so pulmonary से याद रखना कि pulmonary vein और pulmonary artery जब हम बोलते हैं, so those are connected with the pulmonary circulation. That means connected with the lungs. Understood? And systemic body will have all other veins and arteries. सो ब्लड जो है हार्ट से 2 बार पास करता है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. ठीक है, 2 बार पास हो रहा है, ट्वाइस थ्रू द हार्ट. ठीक है, एक तो लंग्स से जाकर के फिर से हार्ट में आ रहा है, फिर हार्ट से निकल करके पूरी बॉडी में जा रहा है और फिर से वापस आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज डबल सर्कुलेशन. सो ये दो सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? इन द सर्कुलेशन द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स, इनटू द vascular system of the lungs, gets oxygenated and then returns to the left auricle through the pulmonary vein. ठीक है, so here let me check whether it is given. See यहाँ पे you're seeing this diagram. क्या बोला है आपको अभी कि हार्ट में कहाँ से जा रहा है? ये जो है, ठीक है, ये क्या है? ये जो ब्लू कलर की ये वाली लाइन दिख रही है, ये आपके हार्ट के, यू कैन सी वेंट्रिकल, ये जो लोअर वेंट्रिकल है, राइट? किस साइड का? ये साइड क्या हुआ? राइट साइड. राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, ठीक है, और लंग्स में जा रहा है और फिर लंग्स से वापस कहाँ आ रहा है? ऑरिकल में, लेफ्ट साइड के ऑरिकल में, राइट? कैन यू सी इट क्लियरली एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Am I audible? Yes, ma'am, clear. Clear? So आपको पता है ना, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट? ऑरिकल वेंट्रिकल हमने बताया, एंड दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड. ओके, सो बेसिकली हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में और फिर लंग्स से वापस left auricle में it comes in. So the blood vessel which is taking it towards the lungs, this is what? This is pulmonary artery. This is pulmonary artery which takes the blood towards the lungs. And a pulmonary vein, ठीक है,
pulmonary vein carries the blood from the lungs to the auricle. ठीक है, so इसीलिए इन दोनों को हमने क्या बोला है, नो दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ये दोनों क्या है, ये एक्सेप्शंस है, दिस एंड दिस दे टू आर एक्सेप्शंस. आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट यहाँ पे ये आर्टरी क्या ले रही है, deoxygenated blood. Blue से जो शो किया है, everything is vein, so deoxygenated blood. But this is pulmonary artery, and veins they carry deoxygenated blood, but here the vein is carry oxygenated blood. Understood? So pulmonary vein and pulmonary arteries are exceptions to their categories. Okay. Now the second system is your systemic system. ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन. यहाँ पे क्या होता है, द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी पार्ट्स, ओके, एंड रिटर्न्स टू द हार्ट इन द राइट ऑरिकल. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. ठीक है, एंड रिटर्न्स टू द हार्ट इन द राइट ऑरिकल. क्लियर? सो लेफ्ट, ये मैं क्यों आपको ये इंपॉर्टेंट बता रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ अंडरस्टैंड, जो ब्लड है उसको फ्लो करना है, पूरी बॉडी में भेजना है, राइट. इट हैज टू गो टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. नाउ द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल इज पंपिंग इट. ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल इज पंपिंग इट. तो पूरा बॉडी पार्ट तो बहुत ज्यादा एरिया है, बहुत दूर तक भेजना है ब्लड को, तो इसको बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ेगा, राइट. इफ वी कंपेयर इट टू द दिस थिंग ना, टू द राइट वेंट्रिकल जो कि लंग्स तक भेज रहा है, तो हार्ट से लंग्स तक बहुत ज्यादा दूरी नहीं है. तो ये जो राइट वेंट्रिकल जब भेजेगा तो इसको बहुत मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पूरी बॉडी के लिए ब्लड भेजेगा तो इसको बहुत ज्यादा pressure has to be given, right. It has to send pump the blood with comparatively higher pressure. Clear है? So therefore ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, मे बी इन द सेम चैप्टर. तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, when we compare the thickness of the wall of all the 4 chambers, okay, the left ventricle will have the thickest wall, thickest heart wall will be there in the left ventricle side, क्योंकि उनको बहुत हाई प्रेशर को बियर करना है, हाई प्रेशर से फोर्स करना है ब्लड को टू गो आउट एंड टू रीच टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. So the heart contracts to push the blood to various parts of the body and then relaxes to receive back the blood from the different parts. Both these phases occur in a rhythmic manner, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल. ठीक है, ब्लड को रिसीव करना और ब्लड को वापस से भेजना, ये जो पूरा का पूरा साइकिल होता है, जो फेजेस होते हैं, ठीक है, ये एक रिदमिक मैनर में चलते हैं वन आफ्टर द अदर, और इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल. ओके, सो ये डबल सर्कुलेशन आपको समझ में आया है होपफुली. आप इसको एक बार अपनी कॉपी में डायग्राम बना सकते हो, जब खुद से बनाओगे तो आपको याद रहेगा. ठीक है, सो देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पूरी बॉडी में लेके जाती है मतलब ब्लड वेसल, उसको हम बोलते हैं मेनली, दिस इज द आयोटा. ठीक है, सो आयोटा इज द मेजर आर्टरी which leaves the heart and it carries the oxygenated blood towards all the body parts, upper body parts, lower body parts. ठीक है, so ये aorta से निकलता है. Understood? Clear है? This is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, आगे चल के when higher classes में आप पढ़ोगे तो आपको और भी arteries और veins पढ़नी होंगी. ठीक है, बट हियर मेनली आई वाज मेनली आपको 2-3 वेन्स और आर्टरीज को जाना है. एक तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, दूसरा चीज ये आयोटा याद रख सकते हो. आयोटा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है फॉर ऑल द बॉडी पार्ट्स. क्लियर? सो ये 3 नाम आप याद रखो. ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल, ठीक है,
सो कार्डियक साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल and dilation or relaxation in diastole. D for dilation, D for diastole. Okay, so remember, जहां पे वो, जैसे आपने कभी ड्रॉपर यूज किया है, राइट? किसी ने ड्रॉपर यूज किया? आई थिंक अब तो इंक पेन्स आती नहीं है, तो आप लोग ड्रॉपर यूज नहीं किए होंगे कभी, बट अगर किसी ने ड्रॉपर यूज किया है तो यू विल अंडरस्टैंड कि जब हम उसमें सिस्टोल करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो चीजें होती हैं, मतलब जब उसका आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जब उसको एक मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, उसमें जो भी चीज होगी इट विल कम आउट, राइट। और जब उसमें रिलैक्सेशन या डायलेशन होता है तो उसके आसपास की चीजें विल कम इनसाइड बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, ठीक है। नाउ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर द 2 phases ऑफ द हार्ट। जब भी कोई पंप काम करेगा तो उसमें ये दोनों फेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो हार्ट में भी ये दोनों फेजेस होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। आपको आई थिंक ये कार्डियक साइकिल बहुत डिटेल्स में नहीं दी होगी, दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ठीक है। Ma'am, in our book, the different parts of व्हाट? the heart are given in details, ma'am. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट, what is given, tell me, because now I think हार्ट के बारे में डिटेल्स नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। so you can read it from your chapter, your book. I can hear, and if you have doubt I'll hear. Heart, the pumping organ. The heart is the size of one's folded fist and weighs about 225 to 340 grams. It is located in the center of the chest cavity, with its tip slightly tilted to the left side. It is enclosed within a protective double-layered membrane called pericardium. The space between the two membranes is filled with a fluid called pericardial fluid, which protects the heart from shocks, jerks, or any mechanical stress. Ma'am, then I'll continue. Wait, okay, which book do you follow? Hello. Ma'am, our school's book, ma'am, Conscience Biology Middle School. Okay, so anyways, so these things actually it's not for 8th standard probably. These things we teach in for class 10th or 9th at least, okay. Anyways, if it is given then I'll just tell you what all things are there. So heart basically इसका size दिया है around a fist, जैसे आप करोगे तो fist के size का होगा, and the heart is located, ये क्वेश्चन आता है in 9th class 10th class कि हार्ट का जो लोकेशन है is it towards left or not, ठीक है। so it is not towards left, हम बोलते हैं कि लेफ्ट में होता है हार्ट, but actually it's not towards left, it is in the center but it is tilted towards left, okay. so so basically because it is tilted towards the left, we see it we feel it towards left, okay, it feels towards left, so that is another thing. Then heart जो होता है, आपको pericardium जो बताया है, pericardium is the it's the outer covering of the heart. जैसे हार्ट का आप जब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो हार्ट के स्ट्रक्चर में पेरिकार्डियम होता है, जैसे आपको यहाँ पे नहीं बताया है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। और पेरिकार्डियम और उसके अंदर वाली लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, ओके। दिस फ्लूइड इज व्हाट, दिस फ्लूइड अब्सॉर्ब्स द शॉक्स, इसलिए ये फ्लूइड, यूजुअली ऐसे फ्लूइड आपको मैक्सिमम ब्रेन में भी जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उसकी भी जो लेयर्स होती हैं उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, वो भी इसीलिए होता है, जो भी आपके बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हमेशा ऐसे एक ल्यूब्रिकेंट से भगवान ने प्रिजर्व किया हुआ है, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है, जैसे हम लुब्रिकेंट होता है
कि जैसे हम शॉक अब्जॉर्बर होता है ना हमारे गाड़ियों में भी, आप देखते हो कि अच्छा हाँ शॉक अब्जॉर्बर अच्छा है तो गाड़ी पे जर्क नहीं लगेगा हम जब बाइक में जाएंगे तो। सिमिलरली हर एक जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है उनको भी इस तरह का एक फ्लूइड के अंदर कवर कर दिया जाता है जिससे उनको शॉक या जर्क ना लगे। इवन वी हैव दिस इन आवर ब्रेन आल्सो। तो हार्ट में वो जो फ्लूइड है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, what type of shocks and jerks? It can be any kind of shock when you when you get an accident, or when you have some emotional shock, or when you have kind of anything. मतलब jerk means it can be physical jerk, it can be emotional jerks, usually heart को कम लगते हैं, but sometimes that is also a kind of jerk. ठीक है, वो अलग चीज है कि अगर आपके ब्लड वेसल में कुछ फंस जाए, ठीक है, तो वो अलग चीज हो जाती है, उसकी वजह से अलग होता है। लेकिन हार्ट जो है, जैसे कि आप तो कोई एक्सीडेंट, कोई फिजिकल जर्क है, तो उससे आपका हार्ट जल्दी से खराब ना हो, इसलिए उस जर्क को लाइक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सच जर्क्स, these fluid is there, usually physical jerks. Okay, ma'am. Then I'll Yeah. continue. Yes. Internally, the heart is divided vertically into a left and a right portion by a membrane or a septum. Each half is further divided horizontally into two chambers, an upper chamber called auricle and a lower chamber called ventricle. Therefore, heart has four chambers in all, two auricles and two ventricles. The right auricle opens into the right ventricle. This opening is guarded by the tricuspid valve, having three cusps or flaps. Similarly, the opening between the left auricle and the left ventricle is guarded by the bicuspid valve, having two cusps or flaps. These valves regulate the flow of blood in one direction, that is from the auricles into the ventricles. Okay. Anything else? Ma'am, then semilunar valve. ओके, ठीक है, तो आप लोगों को वाल्व्स भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो अच्छा, इन हुज बुक दिस पर्टिकुलर थिंग इज गिवन? कौन तनिष्ठा, इज दिस इन योर बुक? Ma'am, can you repeat? Your voice. अच्छा ठीक है, एनीवेज, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ओएशी, ठीक है। अगर आप लोग भी ये सब चीजें सुन लोगे तो आपको फायदा है, बिकॉज 9th में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। सो ये जो वॉल यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस वॉल, इनको हम क्या बोलते हैं? कस्पिड वॉल्स, ठीक है। सो दीज वॉल्स आर ट्राइकस्पिड्स एंड बाइकस्पिड्स वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड्स एंड बाइकस्पिड्स वॉल्व, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड पे। इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ से जो बेसिकली मैंने बताया कि जो लंग्स के लिए लेके जाएगा वो कहाँ से लेके जाता है? हियर, राइट वेंट्रिकल, राइट, इधर से, ठीक है। सो मतलब इस तरफ से लेके जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जो यहाँ से ब्लड पंप होता है, हमेशा ऑरिकल पोर्शन से नहीं, वेंट्रिकल पोर्शन से बाहर की तरफ निकलता है, राइट, वेंट्रिकल पोर्शन से बाहर की तरफ निकलता है। तो ये जो पर्टिकुलर वेन्स और आर्टरीज होती हैं जिसके थ्रू ब्लड बाहर जाता है, इसमें भी एक वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं सेमील्यूनार वॉल्व, ठीक है। सो सेमील्यूनार वॉल्व, ये सारी वॉल्व्स, कस्पिड वॉल्व्स एंड सेमील्यूनार वॉल्व्स, ये दोनों ही वॉल्व्स जो होती हैं दे आर वन साइडेड वॉल्व्स, ठीक है। वो बैक फ्लो को रोकती है कि अगर इस चैम्बर से इस चैम्बर में ब्लड आ गया, तो जब यहाँ से पंप होगा बाहर के लिए जाने के लिए, तो ये वॉल्व खुलनी नहीं चाहिए, नहीं तो पता चलेगा क्या होगा, वेंट्रिकल से वापस से ऑरिकल की तरफ चला जाएगा, राइट। तो ये वॉल्व सिर्फ एक साइड में खुलनी चाहिए, और इधर से पंप होती है बंद हो जानी चाहिए वॉल्व, सो दैट द बैक फ्लो शुड नॉट बी देयर। सिमिलरली यहाँ पे भी जो सेमील्यूनार वॉल्व्स होती हैं उनका भी यही फंक्शन होता है कि वो बैक फ्लो को रोकती हैं, इसलिए वो सिंगल वन डायरेक्शनल होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं। इज इट क्लियर ओशी? Yes, ma'am. And ma'am, what is SA node? Sinoatrial node. ओके, एसए नोड, आपको एसए नोड दिया है और भी कुछ दिया है, एवी नोड भी दिया है क्या? No, ma'am.
व्हाट इज रिटन ऐसे नोट के बारे में? The heart is a pumping organ made up of specialized muscles called cardiac muscles. These muscles show continuous contraction and relaxation without any rest throughout the lifetime of a person. This contraction and simultaneous relaxation is a result of an electrical impulse which originates in a node called the circulatory or SA node. This node is located in the upper right corner of the right auricle and is responsible for setting a rhythm for the contractions and relaxations of the heart, or see the heartbeat. Hence, it is also called the natural pacemaker of the heart. Okay. सो बेसिकली आप जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि हार्ट जो पंप होता है, हार्ट मसल्स जब पंप होती हैं तो इट पंप्स नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. तो यहाँ की जो पंप, यहाँ का जो इलेक्ट्रो सिग्नल जो बोलना चाहिए, जैसे कि हमको नर्व सिग्नल्स देती हैं, तो यहाँ का जो सिग्नल स्टार्ट होता है वो हार्ट की मसल्स इटसेल्फ स्टार्ट करते हैं हमारे अंदर. ठीक है. So जो point where the signal or the electrical impulse to contract and relax, ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन किसी इम्पल्स के थ्रू होना चाहिए. वो इम्पल्स कहाँ से आती है? एक नोड होता है. एक्चुअली 3 मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, वो आपको हायर क्लास में पढ़ाएंगे. इस पोर्शन में कैन यू सी माई दिस थिंग, सॉरी, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, यहाँ पे इस पोर्शन, मतलब ये जो आपका राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच का जो जगह है, यहाँ पे हियर, यहाँ पे एक नोड होता है. ठीक है. Sorry, the position of SA node is like it goes like this to here, and then it goes like through all the walls like this. Okay, so basically SA node and then AV node, मतलब ये क्या है बेसिकली, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि ये पॉइंट्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, एक पोर्शन है मसल्स का जो हार्ट में which will generate the electrical impulse for the relaxation and dilation of muscles within the heart. ठीक है. तो it starts from SA node. Okay, and then it will go to another node and then it will again go to some other portions. ठीक है, जो हम आपको हायर क्लासेस पढ़ाएंगे. Okay, is it clear, Oshi? Yes, ma'am. Ma'am, in total there are 3 valves in our heart: tricuspid valve, bicuspid valve, and semilunar valves. 3 types you can say, but semilunar valve भी 2 जगह होता है. जैसे यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये दोनों तरफ हो गया. उसकी तरफ सेमिलुनार भी एक इधर होगा और एक इस वाले में होगा. जैसे यहाँ पे 2 मेन आपको दिख रही हैं, वेन्स और आर्टरीज जो बाहर लेके जाती हैं. ठीक है. जैसे ये जो है, ये क्या होगी? ये आयोटा होगी, क्योंकि ये नीचे वाले मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में लेके जाती है. तो एक आयोटा में होगा. ठीक है. और इधर से भी होगा, मतलब जो भी वेंट्रिकल से निकल रही हैं 2 मेन वेसल्स. ठीक है. उसमें 2 सेमिलुनर वॉल्स होते हैं. Okay, ma'am. Okay, is there any doubt? Anyone else? ठीक है. सो सिस्टोल एंड डायस्टोल हम बात कर रहे थे कि जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं तो एक होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज, एक होता है रिलैक्सेशन फेज. ठीक है. सो राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल्स ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. देयर ओपनिंग्स in between are guarded by valves. ठीक है. The valves allow the blood to flow only in one direction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों वॉल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. ठीक है. फ्रॉम ऑरिकल्स टू द वेंट्रिकल्स. ठीक है. ये देखो हार्ट का फंक्शनिंग एक आपको शो किया हुआ है इस डायग्राम में. सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू अ लिटिल. क्या होगा? जैसे कि पूरी बॉडी से ब्लड यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. तो जब सिस्टोल होता है, ठीक है, पूरी बॉडी से ब्लड यहाँ पे आता है. ठीक है. मतलब कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरफ आएगा. ठीक है. और यहाँ से हार्ट में मतलब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा. ठीक है. अभी यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से पंप करेगा हार्ट, किधर? लंग्स में जाने के लिए. और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पंप करेगा पूरी बॉडी में जाने के लिए. राइट. तो जब दोनों ही तरफ ब्लड आता है तो सबसे पहले वो किस में आएगा? ऑरिकल में आता है. ठीक है. जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा तो क्या होना चाहिए?
ऑरिकल्स को सिस्टोल करना चाहिए, राइट? ऑरिकल पंप करेगा, मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये वॉल्स खुलेंगी और सब कुछ नीचे की तरफ आएगा दोनों साइड में, राइट? ऑरिकल्स खुलेंगी एंड द ब्लड विल कम इन द वेंट्रिकल, करेक्ट? देन व्हाट विल हैपन, देन वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तो क्या होगा, ये वॉल्स बंद हो जाएंगी क्योंकि वन साइडेड वॉल्स है, एंड इट विल गो थ्रू दीज वेन्स या आर्टरीज जो भी है, उनसे blood will go outside of the heart, correct? And then what will happen, तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, सिस्टोल होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें रिलैक्सेशन होती है वेंट्रिकल में धीरे 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 डायस्टोलिक फेज में, ठीक है? सो जब ये डायस्टोलिक फेज में रिलैक्सेशन होती है, प्रॉपरली आ जाता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे सिस्टोल होता है। तो आपको ये मैं बताऊंगी हायर क्लासेस में। तो यहाँ पे क्या आपको बताया है कि देखो, बॉडी से आया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, फिर वेंट्रिकल से बाहर गया, ठीक है? बी में दिखा रहा है आपको कि वेंट्रिकल से वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लड है, ठीक है? ब्लड अभी नीचे आया। फिर सेकंड में दिखाया कि वेंट्रिकल आपको ब्लड से भर गया। फिर थर्ड में क्या दिखाया कि वेंट्रिकल जो है बाहर की ओर निकल रहा है, वेंट्रिकल से ब्लड जो है इट इज गोइंग आउटसाइड, ठीक है? ये राइट साइड से क्या होगा, ये लंग्स की तरफ जाएगा, और लेफ्ट साइड से क्या होगा, ये पूरी बॉडी में आयोटा के थ्रू जाएगा, ठीक है? आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि आप आगे भी जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके आगे की चीजें बहुत इजीली समझ पाएंगे, राइट लेफ्ट, ओके? सो इज दिस क्लियर? Ma'am, what are those two small things on the right side, ma'am? Those two tubular Where structures. where this one you are telling? Yes, ma'am. Yes. Oh, these things are, see, these are ये कहाँ है, देखो, ये राइट साइड नहीं, आप भी फिर से आप कंफ्यूजन कर रहे हो मुझे। दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है? अभी से याद रखो कि दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, दिस इज राइट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है? सो लेफ्ट ऑरिकल में क्या आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से कुछ जो होंगी वेसल्स, ठीक है, दे विल ब्रिंग द ब्लड टू, क्या होंगे लंग से, क्या आएगा बताओ? लंग से राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट ऑरिकल में what will come, pulmonary vein will come, and it will fill it with the oxygenated blood, right? So this can be the opening for pulmonary vein, and then there are other veins also, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएंगे, ठीक है? देखो ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम लंग्स, ठीक है? दीज आर कमिंग फ्रॉम लंग्स, ठीक है? क्योंकि दो क्यों होते हैं, दो क्यों होती हैं, क्योंकि हमारा लेफ्ट लंग होता है, राइट लंग होता है, दोनों से आते हैं वेसल्स, ठीक है? तो वो आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, आपको मैं सारे नाम बताऊंगी वेन्स वगैरह के, ठीक है? सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरफ आ रहा है, किस तरफ से जा रहा है, ठीक है? ये सिस्टम, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, तो इससे आपको ना अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी ये हार्ट के 4 चैम्बर से, किस चैम्बर से किधर सर्कुलेट हो रहा है, किस चैम्बर से बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। सो दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू मेक इन योर कॉपी, उससे आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है? एंड देन यू सी दिस डायग्राम, ओके? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? कार्तिक? No, ma'am. No. ओके, प्रार्थना? No, ma'am. Okay. So are you saturated for today, or should I take another topic? I think for We are today not saturated. you are not saturated. Let me ask others also, Karthik and Pratna. Otherwise, hepatic portal circulation we can take in the next class. What else is there? What about you, Karthik? Karthik, Pratna? Ma'am, as you wish, ma'am.
As you wish. No, I don't have such wishes. Basically, आप लोगों का course इतना पीछे नहीं चल रहा है, by the way. So I don't have such a hurry. Basically, I want you to understand properly and then read it once more. Okay, make the diagrams properly. Okay, so then we can take the hepatic portal circulation in the next class. Okay, hepatic portal circulation, blood circulation. Okay, so let's just a second. Let me see. Okay, I'll just read this blood circulation. Okay, blood circulation एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या है blood circulation में. ठीक है. So blood returning from the body to the heart is received in the right auricle. It contains carbon dioxide. Simultaneously, the oxygen-rich blood returning from lungs is received in the left auricle. ये मैंने आपको already बता दिया, right? And when the auricles contract, they force the blood into the ventricles, and the ventricles contract and they force the blood into two large arteries, one going to the lungs and another going to the body organs. Correct? So ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों ही आर्टरीज होती हैं. ये जो लंग्स को लेके जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी है, और जो पूरी बॉडी को लेके जाती है वो आयोटा है. ठीक है, ये दोनों ही मेजर आर्टरीज होती हैं हार्ट की. राइट? So this is your basic blood circulation. ठीक है. हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, समझाऊंगी कि ये क्या होता है. ठीक है, या फिर आप इन जनरल समझ लो बहुत थोड़ा सा कि ये जो सर्कुलेशन होता है आप यहाँ पे देख सकते हो. राइट? व्हाट इज हेपाटिक पोर्टल वेन? हेपाटिक मतलब ना, ये हेपाटिक जो टर्म होता है इससे समझ लो जाओ कि यहाँ पे लिवर की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. सो what is there? It is the circulation of the food laden blood from small intestine to the liver and then from liver to the heart. ठीक है. सो क्या होते हैं, ब्लड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सारी जगहों से क्या होता है, लिवर में जाता है पहले. क्यों जाता है? क्योंकि उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है. लिवर का बहुत सारा काम होता है जो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और बहुत सारी चीजें करता है. ठीक है. इसमें ब्लड में जो आरबीसीज हैं वो अगर खराब हो गए हैं, टूट गए हैं, तो उसको भी डिटॉक्सिफाई करके उसको तोड़ करके whatever it has to do, I will tell you the detailed process later. So basically यहाँ से जो ब्लड होता है स्टमक इंटेस्टाइन से, दिस इज गोइंग फ्रॉम वेन. राइट? यहाँ पे आर्टरी से आया, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन दे दिया है. नाउ इट इज गोइंग थ्रू वेन्स. नाउ ये वेन्स क्या होती है, लिवर में एंटर करती हैं. ठीक है. सो लिवर में एंटर करती हैं और फिर लिवर से निकलती हैं और वेन, सो ये जो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम होता है, हेपाटिक पोर्टल वेन्स होती हैं. सो ये सिस्टम क्यों स्पेशल है? क्योंकि यहाँ पे वेन इज एंटरिंग इन अ ऑर्गन एंड वेन इज ओनली लीविंग द ऑर्गन. क्योंकि यूजुअली बाकी जितने ऑर्गन्स होंगे उसमें आर्टरीज विल बी एंटरिंग इन द ऑर्गन एंड वेन्स विल बी लीविंग द ऑर्गन. ओके, बट हियर व्हाट विल हैपन, arteries nahi, veins will be entering in the organ and veins are leaving the organ. Understood? So that's why it is a different kind of circulation. Okay, so liver monitors the substances before passing them into the body. So excess glucose is retained in the form of glycogen and the excess amino acids are broken down by the liver. So देखो ये सारे functions करता है. ये क्या करता है, जो excess glucose है जो blood में intestine ने absorb किया है, वो एक्सेस ग्लूकोज को हमको ग्लाइकोजन बनाना है. नहीं बनाएगा तो क्या होगा, नहीं बनाएगा तो ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाएगा, डायबिटिक कंडीशन हो जाएगी. राइट? उसी तरह से एक्सेस अमाइनो एसिड्स, हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स ना स्टोर नहीं होते हैं. ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं. राइट? सो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं लिवर से, डीएमिनेशन प्रोसेस से. ठीक है. और ये सारे हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो डिटॉक्सिफाई होते हैं. बैक्टीरिया जो होते हैं ब्लड में वो डिस्ट्रॉय होते हैं. ठीक है. एक्सेस मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, दे आर स्टोर्ड इन द लिवर. सो दैट्स व्हाई द ब्लड हैज टू पास थ्रू लिवर. ओके, सो फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन a vein is coming to the liver and that is leaving from the liver and it is connecting to the main vein system of the body, then it is taking it towards the heart. तो इसलिए इस particular system को hepatic portal circulation बोलते हैं. It is different from other circulation because here vein is only entering and vein is leaving the organ.
Is this clear? Yes, ma'am. Okay. So hepatic portal circulation is clear. Blood circulation I've already explained. Okay. Next is your pulse. ठीक है. And blood groups. Blood groups तो हम बाद में ही देखेंगे. ठीक है. So let me cover the topic of pulse. Then next class में हम बाकी topics देखेंगे. Okay. So what is pulse? The arteries अभी मैंने explain किया था आपको, इसलिए मैं एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से. The arteries have elastic muscles, muscular walls, thick and elastic, so which can expand every time when the blood is forced through them. Ma'am, I can't hear your voice clearly. Am I audible to others properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you will. Karthik, maybe there is some problem with your connectivity. No problem, I will send the recording. Okay. So basically what happens, arteries जो होते हैं उनमें क्या होता है, they have elastic muscular walls, right? Elastic walls होने का क्या फायदा होता है कि every time when the blood is forced through the left ventricle, then what will happen, that force will be felt by the muscular walls of the arteries. Okay. So every time when the blood is forced through them due to the contraction of heart, they expand. The contraction of the heart muscles produces a sound, जिसको हम कहते हैं heart beat. Sorry, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, heart beat. ठीक है. अभी मैंने आपको जो सिस्टोल डायस्टोल बताया है वो आप हायर क्लासेस में मैं बताऊंगी कि कब सिस्टोल के टाइम में जब बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दो तरह के साउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस क्यों होते हैं, ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ दीज वॉल्स. जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज होती है तब वो एक साउंड होता है, और दूसरा साउंड होता है जब सेमील्यूनर वॉल क्लोज करती है. ठीक है. और बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ दीज वॉल्स these sounds are produced, and they are heard as heartbeat. Okay, जैसे धक धक, so called filmy fantasy बना के दिखाते हैं धक धक, but if you hear them, so it is like that only. One sound is little for longer time, one is for little shorter time. Okay, so two sounds are heard, and that those are due to the two types of the these things, walls. Okay, semilunar walls and cuspid walls. Okay, so this is what the doctor listens to when he puts his stethoscope to your chest. You can count your heartbeat by feeling your pulse, which is the throbbing of your arteries each time the blood is pumped into them by the left ventricle. Okay, by the left ventricle. So this throbbing can be easily felt by pressing your finger gently over an artery that has come up superficially, such as the one on the wrist along the sides of the thumb. ठीक है, थंब के जस्ट पास जो रिस्ट का पोर्शन होता है वहां पे जब आप टच करोगे, एवरीवन कैन ट्राई. ठीक है, वहां पे आप बहुत जेंटली टच करोगे, एंड इफ यू ट्राई टू फील, you can hear the pulse, you can count the pulse. Okay, so normally the heartbeat is how much? 72 per minute. This is normal heartbeat. Okay, this is 72 per minute. Okay, so the doctor counts the pulse of an ailing person to get an idea about the patient's heartbeat. अगर heartbeat normal से ज़्यादा है तो ये क्या दिखाता है, ये hypertension या फीवर को मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीवर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है. व्हेन वी आर टेंस्ड, सो व्हाट हैपेंस, ब्लड ज्यादा मतलब बीट ज्यादा करता है हार्ट. और अगर पल्स बहुत लो है इसका मतलब है कि हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है. ठीक है, सो बेसिकली आपका जो हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट पल्स जो होती है, वो उसका काउंट एक तरह का इंडिकेशन होता है फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज्ड कंडीशन. ओके, सो एंड हाउ इट इज मेजर्ड? इट इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने सारे डॉक्टर्स के पास देखा होगा, टीवी में देखा होगा, डॉक्टर्स के पास देखा होगा, राइट? सो दिस इज बेसिकली used for hearing the these heartbeat very clearly, क्योंकि
सिर्फ ऐसा ये स्लो और फास्ट नहीं होता है, बहुत बार क्या होता है हार्ट बीट में एक अलग तरह की साउंड सुनाई देती है, अदर देन बीट्स भी कभी कभी कुछ साउंड, मर्मर साउंड्स, कुछ साउंड्स होती हैं ऐसी सुनाई दे सकती है, या फिर कुछ और सिम्टम्स सुनाई देते हैं जब हम हार्ट बीट सुनते हैं. दे ऑल्सो इंडिकेट सर्टेन डिसीज कंडीशंस. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, Yes. so today then we'll end the class here. Okay, and in the next class we'll continue further. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, then see you all. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye.